Welcome dear children. Today we are starting new chapter geometry. Let's see some important points. Our today's chapter geometry is related to shapes and their measurement. The word geometry, geo means shapes and metry means measurement. So let us see some basic concepts which are required for understanding shapes and their measurement. जैसे आप ABCD सीखते हैं तब आप वर्ड सीख पाते हैं, ऐसे ही ये बेसिक कंसेप्ट है. इसके बाद हम ज्योमेट्री की बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे. लेट्स हैव फर्स्ट थिंग इज अ डॉट पॉइंट. फर्स्ट कंसेप्ट इज पॉइंट. Point is a dot made with a sharp pencil. Okay, so if I make a dot, then in geometry it is called a point, and it represents a exact position. I make a dot here, it is also another point. Here it is also another point. Here it is also another point. So many points I have drawn. Now if I say I have to move from one point to another, you will ask which point. So these points are named with a capital letter. Let me name this as point A, this as point P, point X, point Y. So we can name these points using a capital letter. These points show exact position. So if I say that you have to go from point A to point Y, so now you know which place I am telling you to move from. You can move from one place to another. देखिए, या आप यहाँ से यहाँ मूव हो गए, Y से X पे मूव हो गए, X से P मूव हो गए, P से A मूव हो गए आप. So when we join these dots, we form some shapes. तब आपको पता चला पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं शेप्स के लिए. So just a dot made with a sharp pencil represents a point, और पॉइंट का हम नाम भी रखते हैं और वो नाम यूज करते हैं हम कैपिटल लेटर्स से. ओके, line segment is the next concept. You know that points are dots and they are also named. This is another point, it is also named. Now the vertical, when I join these two points with a straight line, it forms another concept of geometry, that is line segment. You join two points with a straight line, you get a line segment. तो ये जो हमने फिगर बनाई थी, लेट मी रिमूव दिस. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट पी, 3-4 पॉइंट बना देती हूं मैं. सो दीज आर ऑल पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट्स. ओके, this xy is an example of line segment. Line segment. Segment means part. Okay, ये segment जो word आपके लिए नया है उसका मीनिंग है पार्ट. लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ. इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा भी एंड पॉइंट होता है. चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कह सकते हैं, या बोथ आर नोन एज एंड पॉइंट्स ओनली. सो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, and we represent it as, we call it as line segment XY. ये इसको बुलाने का तरीका, इसका नेम है. दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट XY. इफ दिस इज पॉइंट A, तो इसको कहते हैं हम पॉइंट A, पॉइंट Q, पॉइंट P. दिस इज लाइन सेगमेंट XY. दिस इज हाउ वी कॉल देम, वी नेम देम इन ज्योमेट्री. लेट्स हैव अनदर रे. एक बार फिर से कर लेते हैं. डॉट है, इसको हम P नाम दे रहे हैं. ये भी एक डॉट है, इसको Q नाम दे रहे हैं. पॉइंट, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. फिर से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, अब बन गया ये लाइन सेगमेंट. किसी लाइन सेगमेंट को आप वन साइड एक्सटेंड कर दें एंड पुट एन एरो ऑन इट, देन दिस फॉर्म्स द रे. दिस फिगर इन ज्योमेट्री इज नोन एज अ रे. अ स्ट्रेट line segment extended on one side is called a ray. इसका नाम हो गया रे. P and PQ. PQ नेम से डिनोटेड है ये रे. So this is ray PQ. Now ray PQ has one starting point, but there is no end point. Since you find a ray over here, an arrow over here, arrow signifies that this goes endlessly in one direction.
ray goes on endlessly in one direction. इस एरो का मतलब ये है कि ये लाइन अभी आगे और जा सकती है, और आगे जा सकती है, like it will and extend even beyond my board. So the arrow shows that it will go endlessly on it. So a ray has one end point, or you can call one starting point, but there is no end point to it. Hence we can't measure rays. रेज मेजर नहीं कर सकते हम. जब किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको शुरू से लेकर एंड तक मेजर करते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक. यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट है ही नहीं, सो वी कांट मेजर इट. ओके, सो रे वी कॉल इट एज रे PQ. दिस इज हाउ वी नेम इट इन ज्योमेट्री. नेक्स्ट थिंग इज लाइन. लाइन क्या होता है? लाइन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स. इसको ये पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें मिल जाती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को एक साइड एक्सटेंड करते हैं तो रे. दोनों साइड जब एक्सटेंड करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को, लेट मी नेम इट AB, then it is called a line. So this is line AB. This is example of line AB. Line AB is extending on both the sides. Extending means I can make it more over this side also, more over this side also. ये दोनों ही साइड से endlessly it will move on and on. So it is a line AB. We name it as line AB. Okay, it has no end point or no starting point. कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, वो नहीं पता हमें. सो सच अ फिगर इन ज्योमेट्री विच इज एक्सटेंडिंग बोथ द साइड्स एंडलेसली, दिस इज कॉल्ड लाइन. एंड वी कैन नॉट मेजर लाइन. उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. वी डोंट नो वेर इट स्टार्ट्स, वेर इट एंड्स. इफ आई वॉन्ट टू मेजर लेंथ ऑफ एनीथिंग, आई वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, then I will need to start measuring it with the scale. Here I should start with 0 and here I should end and see what number it signifies here. So this is the quality of measuring any physical object. You start measuring from some point and you stop measuring at some point. Starting and ending points must be visible, must be known, then only we can measure. तो हमने जो लाइन देखी है उसे मेजर हम नहीं कर सकते हैं. रे को भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो कहाँ ख़त्म होती है पता नहीं. लाइन सेगमेंट, वी नो इट स्टार्ट्स हियर, एंड्स हियर, और वी कैन से स्टार्ट्स हियर और एंड्स हियर. ओके, 2 end points it is having, so we can measure it. Point is so small that we can't measure it. तो आज जो हमने 4 चीज़ें देखी हैं, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज एंड लाइन, इसमें से सिर्फ लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं. 3 things are such that we cannot measure their physical qualities. Their length we can't measure. So these are few definitions of these 4 things. Let's see few examples. Line segment जिसकी definite length होती है. Okay, so a rope, a wire. Okay, your hair strand, आपका बाल, hair strand, its starting point है, ending point है, so you know that these are examples of line segment. Rays क्या होती है? जो start होती है लेकिन कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं. Sun rays, the light emitting from the sun. Sun rays, they start from sun and where they end we don't know that. Likewise, light rays emitting from torch, bulb, tube light, they are generating from their source, but end कहाँ होती है वो हमें नहीं पता. लाइन क्या होती है? जो दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली. वी डोंट नो वेयर, इट इज नॉट विजिबल, वेयर डज इट स्टार्ट. सो यू सी रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक पर आप लाइंस देखते हैं, वहां से आ रही है, बहुत दूर तक जा रही है. वी कांट, इट इज नॉट विजिबल टू सी वेयर इट स्टार्ट्स, वेयर इट एंड्स. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स, so you can understand them better. So you get important points, write them in your notebook.